channel Bright Tutorials, and don't forget to like and subscribe my channel if you are new to this. Now first of all, today's class is for class 10 chapter Biology Life Processes. Okay, living beings are the organism which show characteristics of life, है ना. जो भी हम लिविंग बींग्स हैं हम ही होते हैं ना जो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि हम लाइफ है हमारे अंदर. अब अगर आपको एक लक्कड़ है, प्रॉपर एक टेबल है, वो तो नहीं शो करेगा ये मूवमेंट्स, जैसे कि वो ग्रो तो नहीं कर जाएगा बैठा बैठा. अब मानो तुम्हारा टेबल ग्रो कर जाए बैठा बैठा, ऐसा तो नहीं हो सकता. रिप्रोड्यूस कर जाए, नो. मूवमेंट हो जाए, मूवमेंट तभी होगी जब एक लिविंग बीइंग उस चीज़ को हिलाएगा, यानी कि ह्यूमंस हम, या फिर वो सांस लेना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो लिविंग बीइंग्स ही हैं जो करेक्टरिस्टिक शो करते हैं किसके, दैट इज ग्रोथ, here like a plant is showing, reproduction like I have shown example of amoeba, then movement we do in our daily life like sitting, standing, walking, running, jumping, etc. Then respiration, inhaling and exhaling, inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide, right? Next slide. Now all living organisms are made up of cells. अच्छा, हम सबके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे एटलीस्ट, ठीक है, जिससे हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, राइट. नाउ सेल्स जो है वो आगे फर्दर क्या फॉर्म करते हैं, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, देन टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, organs form organ system, and this leads to a living body. You can take a screenshot of this to be more clear. This all organization is maintained by the movement of molecules around all the time. ये ओरिएंटेशन सारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो हर टाइम रिवॉल्व करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो सारे स्ट्रक्चर्स है ना वो बनते ही मॉलिक्यूल की मदद से. देन life processes are maintenance function which take place even when the organisms are in rest. Like I have shown a lady over here, she is in a rest position, है ना, she is sleeping, but still the basic function of life processes are still on in her just to keep her alive. They are very important to keep them. जिस दिन अगर ये functions ही ना हमारी body में काम नहीं करेंगे, then the person is not alive. Like nutrition, respiration, transportation, excretion are all the basic life processes in order. ठीक है, तो this was just an introduction part for this lecture. Now for more lectures and more good notes for this chapter, let me know in the comment section, and so that I can provide you a proper note for this lecture.